So, hello everybody. I'm Sabra again with a new lecture on spectrum and its type. So, today we are going to discuss the type of a spectrum and the spectrum that we have. So, let's get started. So, what is a spectrum? Here we have a small definition of spectrum written over here. The visual display of dispersion of components, which means dispersion means spreading, okay? The spread up of components of visible light when it is passed through a prism is called a spectrum. It is actually a visual display, or you can say we can see visually, or we can see with our eyes the dispersion, the spread of the components of visible light is called a spectrum. How do we have components of visible light? We all know that the light consists of different rays, different colored particles, which makes it a visible light, a simple, what do we say? A simple sun ray, a sun ray passing through the earth and coming towards the earth is an example of a visible light. But when we pass it through a prism, it breaks down into a component which shows us that further it is further broken down into some pieces, which shows that it further consists of some colors that makes it a visible light or a light ray, white light. So this is the dispersion of components of visible light is called a spectrum. So a spectrum is usually watched by a prism. Prism is a rectangular shape object, a dense object of glass which deflects the ray, or we can say refracts the ray and breaks it into different components or different colors. This is the work that refraction or the prism usually do. Now there are two types of spectrum that we have. One is a continuous spectrum. Continuous spectrum when the boundary lines between the color cannot be marked, which is a have you all would have seen spectrum. Let me show you some examples of the spectrum which will make it better understand. Up here, you know that a light, a visible light or a white light passed through the refraction. It breaks down into simple colors and started to reflect. Here you can say there is no visible distance or distance वाजे है किसी भी कलर के बैंड के बीच में. There is no distance visible between the bands. They are like one side by side to each other, which means that it is a continuous spectrum and continues from red to yellow directly, yellow to orange, orange to yellow, yellow to green, and so on. But the line spectrum is a bit changed. It's not like this. So here we have a line spectrum. You don't need to take tension or like don't get exhausted or like tired or fatigued. Don't get stressed. I'm explaining it. Okay. But wait for a few hours. But here we see that the lights absorbed are in the forms of line from where the spectrum is not visible, which means it's a absorption spectrum, but I will explain it later. So here you can see that there are only some lines visible, like some line of energy or a light. For example, a spectrometer energy, some kind of energy is taken, or some atom or an atom is taken. We have to find the spectrum of that, like some like an energy comes from the atom. Some energy which was only of this much nanometer length and was only of a red spot, so it only covered this stuff. Same goes through this. After some time, it also emits some radiation or energy. It makes an spectrum line. Then after some time, it also emits some line, which we know that atom is a discontinuous
spectrum, like it shows a discontinuous spectrum. So this is the thing. अब now explaining line emission and absorption in detail after this some time. Firstly, we should go with the definition of time spectrum. When the boundary lines between the colors are separately isolated and marked, it is called line spectrum. Okay, the line spectrum is when we have separately lines for this, like this, like this, like this. Up now, we are going to understand the basic phenomena or the basic spectrum of visible light and invisible light. Here we have a whole electromagnetic radiations band, which is explaining you, which I'm going to explain you. Here you can see it is a simple electromagnetic radiation band which you would have studied previously in metric class physics. I just want to here explain the visible spectrum और उसके बाद कि increasing wavelength leveling किस तरह होती है और किस तरह से हमें spectrum obtain होता है. अब here you can see इस बैंड में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ कम होती जा रही है या ज्यादा वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होती जा रही है और जिस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है कम होती जा रही है. अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम है हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है. ये हमें ऑब्टेन होता है 700 नैनोमीटर की लेंथ से लेके 400 नैनोमीटर की लेंथ से लेके 700 नैनोमीटर की लेंथ, जिसमें हमें लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इस तरह से जाते होते डिक्रीज होती जाएगी. अब लेट्स डिस्कस इट. ओके, तो ये क्या है विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर समय है. इस कलर इज वेब गियर, यू नो दिस वेब गियर कैसे लिखना है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, वेब गियर, ऑरेंज एंड रेड आर इनविजिबल over here. अब दिस इज एक्सप्लेनिंग अ स्पेक्ट्रम. लाइक एक लाइट उसको हमने प्रिज्म में डाला, वो टूट गई और टूट के वो डिफरेंट जो उसकी क्या नाम है वेवलेंथ थी वो उनमें बढ़ गई. मतलब वेवलेंथ ऐसे होता है कि प्रिज्म जो होता है ना, अभी लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज प्रिज्म. अब यहाँ से इसकी लाइट लगी. अब जो लाइट जो होती है ना वो क्योंकि यू नो के डिफरेंट स्पीड फॉर डिफरेंट मीडियम, तो जो यहाँ पे होते हैं ना वो सब अपनी अपनी स्पीड में डिवाइड हो जाती है आंखें. कि डेफिनेटली जो ये रेड होती है उसकी है थोड़ी कम स्पीड होती है, इस वाली जो होती है उससे थोड़ी कम होती है, उससे थोड़ी कम होती है, फिर वो कम होती है, तो वो डिफरेंट स्पीड में जब जाती हैं फिर वो टूट जाती हैं सारी, क्योंकि वो अलग स्पीड हो गई, उसकी अलग स्पीड हो गई है, वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है, दे आर नॉट नो लॉन्गर टुगेदर. तो ये वजह होती है उन दोनों की साथ में, मतलब इस तरह से स्प्रेड अप हो जाने को. अब क्या होता है कि जो वायोलेंट होता है ना उसके पास हमारे पास 400 तक उसकी वो होती है वेवलेंथ. तो हाँ वेवलेंथ क्यों बढ़ती है विबग्योर से, और जो वो होता है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस तरह से डिक्रीज होती है. ओके, इंक्रीज होती है और इस तरह डिक्रीज होती है. यहाँ पे लिखा है यू मे अंडरस्टैंड. अब हम समझते हैं इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को. यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं. फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द लॉन्ग रेडियो वेव्स. अब ये जो पार्ट होता है ना ये सारा इनविजिबल पार्ट है. ये सिर्फ ये लाइट हमें विजिबल है दुनिया में आम इंसान को, और जो बाकी लाइट है वो किसी को विजिबल ही नहीं है. हमें नजर नहीं आती कहाँ रेडियो वेव जा रही है, हमें नहीं पता. नजर आ रही होती तो फिर इधर से उधर से रेडियो वेव हो रही होती, ठीक है. अब रेडियो वेव्स की जो होती है ना वो होती है 10⁻⁹ नैनोमीटर की, जो उसकी क्या नाम है वो होती है वेवलेंथ. 10⁻⁹ नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है. और दिस कम्स इन द सीरीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. ये सारी जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है IR है, इंफ्रारेड रेडिएशन. और जो रेडियो वेव होती हैं, सॉरी जो माइक्रोवेव होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁷ से यहाँ तक होती है माइक्रोवेव, ठीक है, 10⁻⁷. और जो IR को जिसको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर ही जो पूरा IR का रीजन होता है ना. अब यहाँ पे इन्होंने मतलब डिफरेंट वेव मेजर की है. ये कहीं से की लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, यहाँ से लेके वहां तक वो है. सो इट्स लाइक दिस. ओके, और ये इंफ्रारेड जो होती है इसकी रेडिएशन का होती है 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻² तक इसकी
मीटर में वो होती है लेंथ। और जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो क्या है, वो नैनोमीटर में। ये क्या होती है, 10⁻⁹ नैनोमीटर। मीटर। और जो माइक्रोवेव होती है उसकी क्या होती है, 10⁻⁷ नैनोमीटर। जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी, समझ में आ जाएगी ये बात। और जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है क्या होती है, 10⁻⁵ नैनोमीटर है। अब हम विजिबल लाइट से इस तरफ के स्पेक्ट्रम पे चले जाते हैं, जो कि होता है अल्ट्रा वायोलेट लाइन्स का स्पेक्ट्रम, जिसकी नैनोमीटर में जो यूवी लाइट होती है उसकी क्या होती है, 10 नैनोमीटर जो होती है उसकी। हम लेते हैं, हम उसकी वेवलेंथ को लेते हैं। जो एक्सरे होती है उसकी 0.01 पॉइंट, लाइक पॉइंट 0.1। और जो गामा रेज होती है, कॉस्मिक रेज जिसे हम कहते हैं, वो होती है 0.0001। ओके, बहुत छोटी, बहुत छोटी डेफिनेशन होती है। मैंने यहाँ पे 3 स्टूडेंट ले लेते हैं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ये इस तरह से इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ हो जाती है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ। जो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमें इससे नहीं पढ़ना तो हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम समझेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। फर्दर दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। लेट मी write it for. So now we will understand the further more types of hydrogen absorption spectrum or line absorption spectrum and line emission spectrum. What happens? The line spectrum, you know that this is a discontinuous spectrum in which we don't have continuous energy, which makes the spectrum. And the continuous spectrum, when we have different bands like this together and we have no discontinuity in energy, is called a continuous spectrum. बट जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, जो कि है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की और हाई सॉरी हाइड्रोजन की नहीं, इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अभी हाइड्रोजन का कैंसिल आउट कर दें, हाइड्रोजन वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास। व्हाट हैपेंस, अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, डोंट गो ऑन इट्स लुक। मैंने कहा वो मेकिंग इट विद दिस पेन इज way more difficult than this, so I made it like this. अब this is in a shell, एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में, ये भी एक शेल है रेड वाला, ये शेल के अंदर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट जम्प्स, वी नो कि डिसकंटिन्यूअस एनर्जी होती है हमारे पास, तो इट जम्प्स फ्रॉम दिस टू दिस विच चेंजेस इनटू अ डेल्टा, डेल्टा ई, वो जो कि क्या होता है, डेल्टा ई की सूरत में बाहर आता है। क्योंकि हमें पता है कि हायर जो एनर्जी ऑर्बिट होता है, जैसे कि ये बड़ा एनर्जी हायर एनर्जी ऑर्बिट है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी इस वाले एनर्जी से, तो जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, वो डेल्टा ई होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास कुछ एनर्जी है जो बच गई। अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो जो एनर्जी जब इमिट होगी ना, तो इट विल शो अ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, मीन लाइक दिस, कि वो बिल्कुल ब्लैक सरफेस में जहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, एकदम से इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करता है और वो क्या नाम है, एकदम वो लाइट लाइन बन जाती है हमारे पास। सो दिस इज इट। अब दिस इज द कन्वर्स इज ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसमें जंप करता है, तो जो डेल्टा ई मतलब, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए ना, उसको कहीं से एनर्जी मिलेगी तभी तो वो जंप करेगा। और वो एनर्जी जो होती है ना, ये पूरी हमारे पास एनर्जी है। अब हम लेकिन हमने इसमें से बीच में देखी ये जो एनर्जी है ना, ये समझे आप, इसको मिल गई और ये इसने हमें जंप कर दिया हायर एनर्जी ऑर्बिट। सो दिस इज द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो पूरे बैंड में से एनर्जी थोड़ी सी गायब है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorbs and jumps into another shell makes absorption spectrum, but when on the contrary, जब emit करता है स्पेक्ट्रम हमारे पास लाइट को और इन द एनर्जी को, तो हमारे पास एक इमिशन स्पेक्ट्रम बन के आता है। So this is as simple as that. I hope you would have understood this lecture. हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, अल्लाह हाफिज।